हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पावर बीआई के हमारे इस ट्यूटोरियल्स जो हम कर रहे हैं इसके आखिरी चरण में, जिसको हम विजुअलाइजेशन के रूप में जानेंगे सीखेंगे। अगर अभी तक आपने कंसिस्टेंटली सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि अब तक आपने जो टफ पार्ट्स है, जो सबसे कठिन पार्ट है डैक्स का, वो आपने कर लिया, जिसमें आप मेशर्स क्रिएट करना सीख लिया। और अब वो समय आ गया है कि जब हम आपने जितनी भी मेहनत की है उसको विजुअल्स के रूप में, कि कैसे आप अपनी कहानी कहेंगे, कैसे आप अपनी बात मैनेजमेंट को पहुंचाएंगे, कैसे आप कंपनी को एक दिशा देने में मदद करेंगे, उस पार्ट पर आ गए हैं कि जो भी डेटा आपने अभी तक को एनालाइज किया है, क्लीन किया है, मेसर्स में कन्वर्ट किया है, टेबल्स बनाई हैं, कैलेंडर टेबल आपने सीखा, टाइम इंटेलिजेंस फार्मूलाज यूज किए और सारे मेजर्स कैलकुलेट किए, राइट। अब इन सब का इस्तेमाल करके हम ये दिखा पाएंगे मैनेजमेंट को कि कहाँ पे किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या करना चाहिए, किस तरफ हम जा रहे हैं। और ये सारा कुछ करने के लिए विजुअलाइजेशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है पावर बीआई का। इनफैक्ट ज़्यादातर लोग तो सिर्फ सोचते हैं कि पावर बीआई विजुअलाइजेशन का टूल है, बट आपने पीछे देखा कि जिन चीज़ों को आप सीखते हैं वो आपकी फाउंडेशन बनाते हैं, नींव बनाते हैं, और उसके ऊपर फिर विजुअल्स आके अपना फाइनल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। सो विजुअल्स के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स देखेंगे, कैसे वो चार्ट्स को हम फॉर्मेट करेंगे, उन विजुअल उसको यूज़ करेंगे एज पर आवर रिक्वायरमेंट। और उसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि कुछ बहुत ही एडवांस टूल्स, जिनको हम बुक मार्क्स कहते हैं, पैरामीटर्स कहते हैं, ड्रिल थ्रू कहते हैं, टूल टिप्स कहते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, जो किस प्रकार से हमारे जो इंसाइट्स हैं उसको और इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट कर पाएंगे हम लोग उनका इस्तेमाल करके। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसमें हम ख्याल रखेंगे कि हम हर वीडियो को 10-10 मिनट का बनाएं, ताकि आप और जो अभी तक आपने स्टडी मटेरियल यूज़ किया है उसी को हम यूज़ करेंगे, वही मेजर्स जो हमने यूज़ किए बनाए हैं वही सारे मेजर्स हैं। सो जो विजुअलाइजेशन वाला जो आपका एक्सेल का जो आप पावर बीआई का जो फाइल खोलेंगे उसमें वही मेजर्स को यूज़ करते हुए हम लोग आगे, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख भी रहे हो, यहाँ पर हमने एक एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड बनाया हुआ है, कस्टमर इनसाइट्स बनाया है, प्रोडक्ट इनसाइट बनाया है, मैप्स बनाए हैं। अगर मैं मैप्स पे क्लिक करूँ तो आपको इसके अंदर मैप के विजुअल्स दिखाई देंगे। यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट इनसाइट्स पे जाएंगे तो प्रोडक्ट से रिलेटेड हम सारा विजुअल, कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसका रिटर्न्स, ऑर्डर वर्सेस टारगेट, रेवेन्यू वर्सेस टारगेट, ये सारा कुछ हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। कस्टमर इनसाइट के अंदर हम कस्टमर्स की परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं, कौन सा हमारा बेहतरीन कस्टमर है, कौन से टॉप कस्टमर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर एनालाइज कर रहे हैं। और एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड हमें ओवरऑल चीज़ें दिखा रहा है। तो ये पूरा का पूरा हम लोग स्लोली बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप इन सारे सेशंस को देखते हो, छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे ताकि आप इनके साथ ही प्रैक्टिस करें, और ये सारी के सारी चीज़ों को बना के सेटिस्फैक्शन होगा आपको, आपको लर्निंग होगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। और लेट्स बिगिन विद अ ब्लैंक शीट। यहाँ पर जब मैं प्लस को क्लिक करूंगा तो एक ब्लैंक शीट खुल जाता है, जैसा कि मैंने बताया रिपोर्ट व्यू है आपका। राइट, रिपोर्ट व्यू कहाँ से आता है, ये देखिए, यहाँ से क्लिक करने पे रिपोर्ट व्यू आता है। आपको पहले बता चुके हैं, ये टेबल व्यू है, ये आपका मॉडल व्यू है। इन सब पे काम करते करते हम यहाँ आए हैं और ये रिपोर्ट व्यू आ गया। रिपोर्ट व्यू के अंदर आप ये देखोगे, यहाँ पर ये सारे आपके विजुअल्स हैं, जिनके अंदर से हम विजुअल चूज कर सकते हैं। वो सारे हमें यहाँ पर भी नज़र आते हैं। तो ये देखिए, साइड में मैंने ये चीज़ें जो लगा रखी हैं, ये यहाँ पर अवतरित होती हैं। अब ये कहाँ से आती हैं, अगर आप व्यू टैब पे अगर आप जाओगे तो इस जगह से हम चीज़ों को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। जैसे बिल्ड को अगर मैं यहाँ से हटा लूँ तो बिल्ड यहाँ से हट जाएगा, लेकिन अगर मैं बिल्ड को क्लिक कर दूँ तो बिल्ड यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे भी सारे विजुअल्स मेरे को दिख रहे हैं, जिनसे मैं विजुअल्स लाकर यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। फॉर्मेट का टूल अगर मैं वहाँ से हटा लूँ तो फॉर्मेट टूल वहाँ से हट जाएगा, क्लिक करूँगा तो देखिए फॉर्मेट का टूल यहाँ पर आ गया। तो व्यू के अंदर से ये सारे टूल्स जो हैं, जिनको जिसको भी आप क्लिक करोगे, बुक मार्क्स क्लिक करोगे तो बुक मार्क आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। और उसके बाद फिर हम इसके अंदर इनको हम कोलैप्स कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, ये अब आप जानते हो। और इसके अंदर अब हम विजुअल्स क्रिएट करना शुरू करेंगे। सो नाउ दिस एरिया on this which we'll be working, let's analyze and understand this. So if I click on this and go on this format, you'll see this format thing will bring in picture
the page information, Canva settings, Canva background, wallpaper, all these things let us explore. If you go to the page information, it tells you the name of the page and you can change it from here, right? So demo visual, so we have just tried to name it and I entered. So it will take the name as demo visual here. If you can see, the page name has changed. Now page type, page types, there are multiple page types. Standard is by default. If you take a tooltip page, it is used to create tooltips. If you want to drill through is a kind of filtering option which we'll learn in detail and create it, but we will keep it as the default one for standard, right? And allow Q&A is like which allows question and answer asking sessions from here. We go to Canva settings now. Canva settings will allow you to decide what is the size of your Canva. By default, again, it is 16 is to 9. If I select to 4 is to 9, you will see that the dotted line or the page is appearing here. If I select letter option, you will see it still becomes thin. It becomes the shape of a letter. If we click on tooltip, it becomes a small square here, right? So these are different options of the Canva settings, and here also we will keep it as 16 is to 9. We click on 16 is to 9, the whole rectangular block is taken here on which we can do our visuals, right? Now we'll go down and we can choose the alignment to be top, bottom, vertical, mid, top or middle. Sorry, top or middle. We can choose it. We'll keep at the top right now. Now Canva settings I will collapse and I'll go to the next option, which is Canva background. Now Canva background will allow us to give a color to the Canva. Right now it is white. So let us take a dark black color. Let's take a black color. So we'll see that the black color has put my Canva as made my Canva as black. Here transparency generally is 100% in normal cases. So if it is 100%, you can just reduce the transparency and you can ensure that what kind of color you are looking for. So I have reduced it to 0% and I'm getting the dark black color. Now I'll collapse the Canva background and next option I have is the wallpaper. Now in the wallpaper, what is the difference? If I collapse this, you'll see that on the sides of this white color is there. On the black portion is the Canva on which we will be doing our visuals. But on the left and right side, we have got this white color, which is the wallpaper side. So if we click on the format here, right, on the format, and we click on the wallpaper, and here if you see, I can again make it black, and transparency I can reduce to 0%. And now if I collapse, you will see that the side panels are also now black. So my Canva is black, my background is black, and now I'm ready to start creating my visuals. So in this session, I'll just create one visual type, and I'll show you that how visuals will be created. In the second session, we'll take the visuals in great detail in the next session. So I'll just click on this design button, build button, and from here, if you see that cards are the simplest and the easiest visual type, and we'll try to create some cards here. So okay, so if I click here, you'll see that the visual has been introduced and everything else has gone. Now it is a pure black background and we have got this visual with us. And now to this visual we can decide and work on it. In the next session I'll take in great detail, but right now I just want to show one or two types of visuals. So once we have got this, I'll go to this and it is asking that what kind of data you want to add to it. And I'll go to the measure table and I'll take some broad category things which I want to show here. For example, we can show, if I go to the math DAX and if I say here, what is my total orders? So if I click on this, you'll see that I got the total order numbers here. And now I can decide to format this. I'll just click on this. Now if once I click on this and click on the format part, build, I'll just give up. This format will allow me to change color and do things on this. If you see that I am getting visual and properties, there are two things here using which I can make changes and
format it. Now first one is size and style, and here I can just go and decide what kind of size or style I want, right? If I collapse this, then it is talking about padding and background and the size style itself. Sorry, I'll go down, and if you see, background is on as of now and the color is white. So if I take a particular color, it will show that particular color here. If I want to give any color, we can choose for it and we can show it in that way, right? Preferably we'll take some light color so that we can show it on this. And size, we can always keep it like this. I just made the size like this. And once the background is done, we can also go and format the callout value and other things. Title, if I say that I don't want the titles, I reduce. You can see the title is introduced here. If I say off, the title has gone, right? And for the callout value, I'm collapsing it. I'll just take it up so that you guys have a better look. Callout value is talking about what size of font and things can be taken. So here we can choose whatever font we want, right? And the size we can decide. We can decide the size. I can take it, say for example 20. If I say 2020, so the size will be decided accordingly. Let us keep it at 30. So this is the size, right? And then display units, if you want to display auto, or we can decide that we want 1000, millions, we can do all those formatting. So visuals can be formatted from this side. Okay, and if you want to create some more visuals, I'll just show you one more visual, and then later on, for example, if I want to introduce, say for example, a column chart, I can click on this and you'll see a column chart is introduced, and I'll add values. If I want to introduce a line chart, I'll go here and I'll introduce a line chart. So we'll be building a lot more visuals in the coming session. Here I'll stop here. And again, I request that practice along, create a new Power BI file along with the measures, try creating this, work along with this. The practice files have already been given to you guys. In the next session, we'll get into more detail for the visual part of it. Thank you.